Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesterday I was completed the two important LAQs which are going to come in the 19th question. 19th में LAQ जो शुरू हो रहा है उसमें दो क्वेश्चंस दिया मैं. फर्स्ट वन बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये इसका एक्सप्लेनेशन कल दिया था मैं. फिर द सेकेंड क्वेश्चन इसमें 19th में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है भाई, वो क्वांटम नंबर्स. सो ये दो क्वेश्चन से क्वेश्चन आता 19 में. नो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. इन द क्वेश्चन नंबर 20 there are three important questions are there. Which are those? First one, this is from second chapter. Yesterday I was explained this also, SPDF blocks. Okay, how the elements in the periodic table are classified into various blocks, explain. This is the one question. And second one is what? Define IE1 and IE2. Define IE1 and IE2. Why continuation of this in the question only? Why IE2 value is more than IE1 value, and write the factors that affecting IE values. ओके, इसमें फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन हो गया. और यहाँ पे ये आज मैं डिफाइन IE1 IE2 के बारे में समझाता हूँ ना. देन उसके बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. ओके, व्हाट इज पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं, व्हाट इज पीरियोडिसिटी और व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. नाउ देन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, हाउ द फॉलोइंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज periodic properties or changes in or varies in groups and periods. ओके, तो 19th में ये दो क्वेश्चंस है. इसमें से एक आता का ऐसा भी रहता है एग्जाम में. ये 20th क्वेश्चन में सेकेंड चैप्टर से मैं 3 LAQs दिया. SPDF ब्लॉक्स, सेकेंड वन IE1 IE2 and factors, and third one periodicity. What are the periodic properties? How the following periodic properties are changes in groups and periods बोल के देता. तो इसमें ये तीन क्वेश्चंस मैं समझाया क्वेश्चन नंबर 20 में, और दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दैट इज द डिफाइन IE1 एंड IE2. इसके बारे में टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द ionization energy. Simply that is called as IE. Ionization energy का मतलब क्या होता है, थोड़ा इधर देखिए आप. दिस इज एन एटम के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के गोल इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है. तो मैं क्या करना समझ रहा हूँ, इसके लॉस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना समझ रहा हूँ. इसको निकाल देना है. ऐसा खाली थोड़ी होता है. ये इलेक्ट्रॉन जन्म ले तो इसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन रहने से एनर्जी को देना पड़ता है. वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन. Okay, you have to use this some energy. How much amount of the energy is required to remove the electron? The condition is gaseous atom रहना. It is applicable for the neutral gaseous element. ये gaseous element को applicable है. अब total definition बनाना है. What is the definition? Ionization energy बोले तो. So this is the definition. The amount of energy required to remove the electron from the neutral gaseous atom. Okay, from the last shell of the neutral gaseous atom is called as the ionization energy. Once again I am repeating this definition. The minimum amount of energy required to remove the electron from the last shell of the neutral gaseous element is called as ionization energy. If we are removing one electron, that is called as IE1. एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो IE1 बोलते हैं. एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद से, फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन. m है भाई, एक एलिमेंट है ये. m को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग द एनर्जी टू द एलिमेंट, आई एम सप्लाइंग द एनर्जी. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, m प्लस फॉर्म हो और इलेक्ट्रॉन निकल गया. हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, IE1. नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस वन, सेकेंड वन. देखिए m प्लस, एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद जो बच गया, that is unipositive ion.
यूनिपॉजिटिव आयन को एनर्जी दे रहा हूं तो और एक एक इलेक्ट्रॉन निकला समझिए, तो यम जाके क्या होता है m+2 हो जाता, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के वास्ते कितनी एनर्जी होती, दैट इज कॉल्ड एज I2, the amount of energy required to remove the electron from the unipositive element, single positive ion, not element, single positive ion is called as ionization energy 2. The amount of energy required to remove the electron from the neutral gaseous atom is called as ionization energy 1. Amount of energy required to remove the electron from the unipositive ion is called as the IE2. These are the definitions. Now then you see that why IE2 value is more than IE1. For this I am answering why IE2 value, ionization 2 value is more than ionization energy 1. So you see that whenever the electrons are removed, एक electron, for example I am taking this sodium element, sodium को ले लिया मैं, how many protons are there, 11 protons, इसके तरफ 11 electrons फिर रहे समझो, अब मैं 11 electrons इधर डाल लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन चले गया, प्रोटॉन्स कितने बच गए, पॉजिटिव चार्ज से 11 प्रोटॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन कितने बच गए यहाँ पे, क्योंकि अपन प्रोटॉन नहीं निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा है यहाँ 10, तो इसकी ताकत बढ़ जा रही है, इसीलिए क्या हो रहा बोले तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होता है इसके तरफ में, तो ज्यादा अट्रैक्ट हुआ तो अपने को इलेक्ट्रॉन निकालने के वास्ते ज्यादा एनर्जी होना पड़ता, वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो अट्रैक्शन बढ़ता, और एक एक निकाल दिया और अट्रैक्शन बढ़ता, कभी भी IE2 वैल्यू इज ग्रेटर देन I1, IE3 वैल्यू इज ग्रेटर देन IE2, लाइक दैट, because what is the reason, whenever the electron is removed, on the remaining electron nuclear attraction is increases, due to this effective nuclear attraction we need more energy to remove the electron. This is the reason, this is the reason IE2 is more than the IE1. And then we will see the factors that affecting the IE values. Following are the factors that affects the IE values. Among them, first one is what? Atomic radius, atomic size or atomic radius. Atomic radius is the first factor that affects the IE value. That means IE values are depends upon the atomic radius. What is the relationship? That अब जरा सोचना है आपको, अगर साइज अगर बढ़ गया, साइज ज्यादा हो गया तो क्या होता भाई, और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ जाता और अट्रैक्शन भी कम होता। तो अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप? You see that IE values are inversely proportional to the atomic radius. If radius is more, we need less energy to remove the electron, that is IE is less. So if the radius is less, IE values are more. So this is about the first factor. Once again I am repeating, first factor is atomic radius. If the radius of the atom is more, we need less energy to remove the electron. If the radius is less, we need more energy to remove the electron. So the relationship is IE values are inversely proportional to the atomic radius. This is the first factor. And the second one is the nuclear charge. Nuclear charge. Nuclear charge. This is the second one. You see that if the charge on the nucleus, just I was explained you, देखिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन की ताकत ज्यादा, यानी न्यूक्लियर की चार्ज प्लस चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, तो अट्रैक्शन क्या होते जाता, और इंक्रीज होते जाता है, अट्रैक्शन इंक्रीज होते जाता। इफ द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज इंक्रीजेस, न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हुआ, तो वी नीड मोर एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज और IE के बीच में क्या रिलेशनशिप है? IE वैल्यू इज मोर when nuclear charge is also more, nuclear charge, that is directly proportional. IE values are directly proportional to the nuclear charge. Next, what is the third factor? Screening effect. Third factor is what? Screening effect. Screening or shielding effect. Screening or shielding effect. What is the meaning of this screening or shielding effect? Once again I am drawing like this. देखिए shells है और ये electrons है, ये समझ जाइए ये मैग्नेट है और ये समझ जाइए एक लोहा है, तो बीच में अपन क्या कर रहे हैं, बीच में थोड़े दूसरे सब्सटेंसेस डाल दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके ऊपर, यानी मैग्नेट का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन पे यानी लोहे पे क्या होता बोले तो यहाँ पे कम हो जाता।
Once again I am repeating, if the number of shells and their electrons are increases, attraction, nuclear attraction on this electron decreases. If the number of shells increases, nuclear attraction on this electron decreases. A decrease in the nuclear attraction on the last shell electron due to the presence of inner shells is called as the screening effect. अंदर की शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स की वजह से लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होने को, डिक्रीज होने को क्या बोलते बोले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं. दिस इज द डेफिनेशन. अब मेरे को बोलिए, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होता और वी नीड लेस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. देयरफॉर व्हाट इज द रिलेशनशिप? आई वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. 1 by ले लेना, inversely proportional to what? Screening effect. If the screening is more, that means if the inner shells are more, we need less energy to remove the electron. If the inner shells are not there, we need more energy to remove the electron. IE values are inversely proportional to what? Screening effect. This is about the third factor. Another factor, fourth one, penetration of the electron. यस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में है, ज्यादा पेनिट्रेट होता बोल रहे हैं. फिर उसके बाद में पी ऑर्बिटल ऐसा है, ज्यादा पेनिट्रेट नहीं होता. जिसमें ज्यादा पेनिट्रेट हुआ उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है. दैट मीन्स देखिए, यस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहा तो उसको निकालना मोर एनर्जी होता. तो इसीलिए s orbital s block elements are having more IE values than the p block elements. ऐसा थोड़ा ऐसा डाल लेना, s p d f. This is the penetrating order. If the penetration is more, IE value is also more. That means penetration is directly proportional to the what? IE values are directly proportional to the penetration. Now then, last factor, that is the electron configuration. Stable element does not loses electron easily. We need more energy to remove the electron from the stable elements. Now then, what is the stability? You see that if in the p orbital or d orbital, whatever it may be, half filled configuration, सिंगल स्पिन्स है, या नहीं तो पी ऑर्बिटल के अंदर देखिए कंप्लीटली स्पिन्स ऐसा फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल अगर है. डी ऑर्बिटल में भी हाफ स्पिन्स, यानी कि डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 है, या तो 5 इलेक्ट्रॉन रहना या तो 10. पी ऑर्बिटल में या तो 3 इलेक्ट्रॉन रहना या तो 6 इलेक्ट्रॉन रहना. तो इसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिटल बोलते हैं यहाँ पे. दिस इज द कॉन्सेप्ट है ये. So half filled or full filled orbital containing elements are stable. Therefore, we need more energy to remove the electron from those elements which are stable. This is about the electron configuration. For example, nitrogen IP values are more than oxygen. What is the reason? In the nitrogen, half filled configuration is there. You know that atomic number of the nitrogen is 7. Configuration 1s2, 2s2, 2p3 is the configuration. So you see that in the p orbital there are 3 electrons are there, 1, 2, 3. Now next, in the oxygen, while in the case of oxygen, atomic number of the oxygen is 8. Electron configuration 1s2, 2s2, 2p4 is the configuration. I'm writing this 2p orbitals, 1, 2, 3, and this is the 4th electron. In the case of the oxygen, half filled configuration is not there. And in the case of the nitrogen, half filled configuration is present. Therefore, nitrogen IP value is more than the oxygen. These are the some important factors that affects the IE values. So this is about the 20th question. 20th question के अंदर 2 questions को explain करा मैं. First one is SPDF blocks. आज मैं IE1 और IE2 factors के बारे में समझा. और 20th question में और एक जो important है, उस और एक वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है भाई, वो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. व्हाट इज पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी किसको बोलते हैं? व्हाट इज द पीरियोडिसिटी? फॉर एग्जांपल, सीजन पीरियोडिक है या गर्मा, 6 महीनों के बाद में फिर एक सीजन रिपीट होता, फिर और एक सीजन रिपीट होता.
फिर गर्मा के बाद बारिश होती, बारिश के बाद फिर सर्दी होती, फिर उसके बाद फिर गर्मा आता। तो ऐसा एक मुद्दत के बाद वन थिंग इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रॉपर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब अपने क्लासेस भी है, ये टाइम पे एक क्लास है, फिर कल ये टाइम पे वही क्लास रहती, तो बार बार रिपीट होने वाली चीज को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक बोलते हैं। तो इन द पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, दैट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये लिथियम में, लिथियम के बाद में क्या आ गया भाई? बेरिलियम आया, फिर बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, फिर यहाँ पे नोबल गैस आता। ये मेटल है, ये भी मेटल है, तो मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाता, फिर नोबल गैस आता, फिर इसको छोड़ दो, फिर उसके बाद में ये मेटालिक नेचर फिर से रिपीट होता। आफ्टर प्रॉपर इंटरवल मोर मेटालिक एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, ऐसी नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये मोर नॉन मेटालिक है। ये प्रॉपर्टीज बार बार एक इंटरवल के बाद रिपीट होते जा रहे हैं, मेटालिक है, नॉन मेटालिक है, थोड़े प्रॉपर्टीज रिपीट होते जा रहे हैं, तो दोज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। Certain properties which are repeated after proper intervals are called as periodic properties. Among those, first property that is atomic radius. Atomic radius is the periodic property. Atomic radius है, इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन लिखना, how that is changes in groups and periods, ये पढ़ना है आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, थोड़ा ये याद रख लिए तो बाकी के पूरे प्रॉपर्टीज आ जाते। वी कैन गेट द पीरियोडिसिटी, द पीरियोडिक रिमेनिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टी, ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, रिमेनिंग ऑल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक रेडियस ओनली। So concentrate on this atomic radius. First you have to give the definition. What is the atomic radius? कितना भी शेल्स रहने दो भाई, ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो भी डिस्टेंस है, that is called as the atomic radius. Distance between the center of the atom, that is the nucleus, to the outermost shell. In an atom, the distance between the nucleus and outermost shell is called as atomic radius. Once again I am repeating, in an atom the distance between the nucleus and outermost shell is called as atomic radius. Angstrom है, nanometers है, these are the units for the atomic radius. एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर, पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में बुला लेते हैं, यूनिट्स में एक्सप्रेस कर दे। नाउ देन एटॉमिक रेडियस कैसा चेंज हो रहा ग्रुप में? चेंज ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, वेरिएशन के बारे में समझा रहा हूं मैं, वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। वेरिएशन में फर्स्ट थिंग देखिए बेटा, इन ग्रुप्स वेरिएशन में हाउ दैट इज चेंजेस इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में समझा रहा हूँ, ग्रुप बोले तो ऐसे ही खड़े लाइन को बोलते हैं, कॉलम को बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप के एलिमेंट्स लिख ले रहा हूँ मैं। फर्स्ट है ग्रुप के लिथियम है, उसके बाद में सोडियम है, उसके बाद पोटाशियम है और रुबीडियम, सीजियम, दीज आर द ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट है ग्रुप, वॉट एवर इट मे बी इन ए ग्रुप, व्हाट इज गोइंग ऑन, जस्ट यूज चेक इट आउट। Lithium atomic number is 3, atomic number is 11, and atomic number by adding the 8 you will get the number of this. Okay, number is 19. So see here I am writing the configuration of the lithium: 1s2, 2s1, sodium configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, and potassium configuration finally you will get the 3s2, 3p6 and 4s1, 4s1. You see that in the group from top to bottom shell numbers are increased. In lithium 2 shells are there, in the sodium 3 shells are there, in the potassium 4 shells are there. From top to bottom as the atomic number increases, shell numbers are also increases. As the shell numbers increases, atomic radius increases. That means ऊपर वाले छोटे रहते हैं, नीचे वाले ज्यादा साइज में रहते हैं, एटॉमिक रेडियस ज्यादा रहता। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज ड्यू टू इंक्रीज इन द शेल नंबर्स, एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप बोलते ही टॉप टू बॉटम याद रखना। इन ग्रुप्स top to bottom atomic radius increases. Now next we'll see in periods. In periods from left to right atomic radius. I'm writing this one. lithium है, फिर बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। देखिए लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, बेरिलियम का 1s2, 2s2, बोरॉन का 1s2, 2s2, 2p1 और कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3,
1s2 2s2 2p4 is the configuration, 1s2 2s2 2p5 is the configuration. You see that I am not changing the shell numbers. इसमें लेफ्ट टू राइट जो भी लिख रहा हूं मैं शेल नंबर से नहीं बदल रहे हैं, सेम नंबर ऑफ शेल्स रह रहे हैं लेफ्ट टू राइट. देयर इज नो चेंज इन द शेल नंबर्स. एलिमेंट्स जो भी है पीरियड्स के शेल नंबर नहीं बदल रहा, तो शेल नंबर नहीं चेंज हो रहा, मगर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सेकंड शेल? इन दिस वन इलेक्ट्रॉन इज देयर. नो देन न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है. यहाँ पे क्या है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स है शेल में. प्रोटॉन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मगर शेल नहीं बदल रहा. शेल इज सेम, same number of shells are there in a period from left to right. Due to increase in the number of electrons in that shell and increase in the protons in the nucleus, nuclear attraction between this shell and this nucleus is increases. Electron और shell के बीच में, shell के अंदर जो भी electrons है इसके बीच में attraction increase होता. जैसा ही नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्रोटॉन्स के अट्रैक्शंस इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शेल करीब में था, दूर में था, वो शेल आहिस्ता आहिस्ता करीब होते जाता. ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन द सेम शेल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस decreases. In periods from left to right, atomic radius is decreases because the number of electron and the number of protons in the nucleus and the number of electrons in that shell increases. Due to the increase in the nuclear attraction, what happened, that shell becomes, that shell is moves towards the nucleus, that is shell shrink होता, थोड़ा करीब में आता nucleus के, left to right atomic radius decrease होता. In periods from left to right, atomic radius is decreases. ये याद रहा तो बाकी के पूरे प्रॉपर्टीज याद हो जाते. तो वंस अगेन एटॉमिक रेडियस के बारे में बोल रहा हूं मैं. एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, ये याद रखना है, इंक्रीजेस. तो इन चेंजेस इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस इन पीरियड्स लेफ्ट टू राइट, ये याद रखना है आपको. लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होता, डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता. तो ये कॉन्सेप्ट है, अपन रिमेनिंग पूरे चीजों को, मतलब रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को लिखना है. रिमेनिंग प्रॉपर्टीज के सबका रीजन क्या बनता, एटॉमिक रेडियस ही बनता. तो सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज व्हाट, आयोनाइजेशन एनर्जी. जब से मैं समझा, सो इसका डेफिनेशन मालूम है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल ऑफ द न्यूट्रल गैसेस एटम इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. ये डेफिनेशन हो गया. फिर उसके बाद में द नेक्स्ट थिंग इज how this ionization energy changes in groups and periods. Change of the ionization energy in groups में कैसा बढ़ रहा, हर ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, जस्ट आपको देखना है. फैक्टर्स में मैं जब से पढ़ाया, एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है. IE वैल्यूज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द IE वैल्यूज. तो आप सोचना है भाई आपको, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, रेडियस इंक्रीज हो रहा. फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजेस, नो जस्ट आई हैव रिटन इट हियर. So as radius increases from top to bottom, IE values are decreases. You have to write like this. From top to bottom, IE values are decreases. Reason for that is due to increase in the atomic radius. That's enough. Now next, how this IE values are changes in periods. Periods में कैसा बदल रहा. In periods from left to right, you have to think. From left to right, what is going on? Atomic radius का थोड़ा दिमाग में ला लेना. एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा, तो आई वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, बिकॉज रिलेशनशिप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो सोच के एक बार फिर आप क्या लिखना, यू हैव टू राइट दिस आंसर बेटा. इसमें क्या लिखना है, एटॉमिक, इसमें आई वैल्यूज आर इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंक्रीजेस. व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, आई वैल्यूज आर इंक्रीजेस. दिस इज अबाउट द सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी. Now third periodic property, that is the electron affinity. electron affinity के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल के भी बुलाते, EA से लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. See that what is the definition for the electron affinity. न्यूट्रल गैसेस एटम के अंदर मैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूँ. एक इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो एनर्जी रिलीज होती. How much energy is released when an electron is added to the
atom. That is the energy, amount of energy released when electron is added to the atom is called as electron affinity. Electron affinity बोलते हैं amount of energy released when electron is added to a to atom, that is called as electron affinity. Now, electron affinity is measured with the help of the Born-Haber cycle, electron volts, kilocalories, kilojoules, all these are the units for the electron affinity. Now, then you see that electron affinity is also inversely proportional to the atomic radius. देखिए ये है, तो इसीलिए इससे पहले से बोल रहा हूँ मैं आपको, from top to bottom electron affinity value is decreases because due to increase in the atomic radius. Top to bottom electron affinity value decreases. What is the reason? Reason is due to increase in the atomic radius. This is about the electron affinity variation in groups. Now changes or variation in periods. You have to think once again, from left to right atomic radius is decreases. Atomic radius is decreases means what is the relationship? Inversely proportional. Therefore electron affinity values from left to right increases. Reason for that is a decrease in the atomic radius. What is the reason? Decrease in atomic radius. Due to decrease in the atomic radius, electron affinity value increases from left to right. This is the third periodic property. Now next one, electronegativity. Electronegativity. What is the electronegativity? It is applicable for the shared pair of electrons, bonded electrons. For example, hydrogen and chlorine. Between this hydrogen and chlorine, covalent bond is formed by means of the mutual sharing of electrons. This is the Lewis dot structure. At here, covalent bond is formed between the HCl. These are called as the bonded electrons. ये bonded electrons है, shared pair of electron है. ड्यू टू मोर एबिलिटी, ये जो क्लोरीन साइज कम रहने की वजह से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा, बीच में रहे सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब होते, हाइड्रोजन से दूर होते. दिस इज द टेंडेंसी, एबिलिटी ऑफ द एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स को एप्लीकेबल है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स में शेयर्ड पेयर को एप्लीकेबल है. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं. टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. once again this electronegativity depends upon the atomic radius only. Okay, what is the relationship? Electronegativity is inversely proportional to the atomic radius. If the radius is more, electronegativity is less. This is the relationship. If the radius is less, electronegativity is more. So based on this, from top to bottom क्या हो रहा आप लोग बोलना है. From top to bottom, as the radius is increases, electronegativity values decreases. यानी ऊपर के एलिमेंट्स की नेगेटिविटी ज्यादा रहती, नीचे के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहती. नो चेंजेस इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होने वाला है? In the periods from left to right, atomic radius is decreases. Atomic radius decrease हो रही, तो इसीलिए electronegativity values increase होते. So this is about the next periodic property, that is the electronegativity. And the last periodic property, जब जब पूछता वो एग्जाम में नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं. देखिए नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बोले तो यहाँ पे ऑक्साइड्स के कौन से नेचर रहते हैं, कौन सा एसिडिक नेचर है, बेसिक नेचर है, इसके बारे में कैसा चेंज होता है इसके बारे में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट all the non-metallic oxides जैसा कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, all these are the non-metallic oxides. नॉन-मेटल के साथ में ऑक्सीजन रहा तो non-metallic oxides बोलते हैं. नॉन-मेटालिक ऑक्साइड्स को पानी में डाल के देखो, व्हाट वी विल गेट द H2CO3. इसका नाम कार्बोनिक एसिड है. और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड आता है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड आता है. SO3 को पानी में डाल लिए तो वट एवर इट मे बी, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर कौन से नेचर में रहते हैं बोले तो एसिडिक नेचर में रहते हैं. ये याद रखना है आपको.
नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, वाइल कौन से भी मेटल्स ले लो आप, Na2O ले लो, CaO, ये मेटल्स है। मेटालिक ऑक्साइड्स को पानी में डाल के देखो, यू विल गेट दी वेन एवर दी metallic oxides are dissolved in water, you will get the bases. Non-metallic oxides are basic in nature, and metallic oxides, non-metallic oxides are acidic in nature, and metallic oxides are basic in nature. So metallic nature is increases with atomic radius. You have to remember this. Metallic nature is increases with the atomic radius. From top to bottom, metallic nature increases. Top to bottom, metallic nature increases. Therefore, basic nature increases. Basic nature increase होता है top to bottom. फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ले ले रहा हूं मैं, कौन सा ग्रुप है भाई, ये नाइट्रोजन फैमिली है। यहाँ पे ले ले रहा हूँ N2O3 है, P2O3 है, AS2O3 है, SB2O3 है और Bi2O3। दीज आर द फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट ऑक्साइड्स। ओके, तो टॉप टू बॉटम ये नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स है। ये देखिए ऐसा टॉप टू बॉटम मेटालिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ये मेटल है, ये भी मेटल है। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा, एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीज हो रहा, बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीज हो रहा। मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज द मेटालिक नेचर इंक्रीजेस, basic nature of the oxides increases. Like that only in the periods from left to right, acidic nature of the oxides increases and basic nature of the oxides decreases. For example, third period elements ले ले रहा हूं मैं यहाँ पे, सोडियम है Na2O, और नेक्स्ट वन सोडियम के बाद है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फिर Al2O3 ऐसा डाल लिया मैं, फिर नेक्स्ट वन एल्यूमिनियम के बाद में P2O3 डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो CO2, P2O3, और नेक्स्ट वन SO3 और वॉट एवर इट मे बी Cl2O7, these are the oxides which are there in third group के oxides है ये। From left to right you see that this is the metal and it is also metal, तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रही, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रही। इसका मतलब ये लेफ्ट वाले कौन से है, बेसिक नेचर में है, और राइट वाले कौन से है, एसिडिक ऑक्साइड्स है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स इंक्रीजेस एंड बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स डिक्रीजेस। These are the three important questions which are there in the second chapter. इंशाल्लाह फर्स्ट चैप्टर के 2 और सेकेंड चैप्टर के ये 3 क्वेश्चंस पढ़ लिए आप लोग, तो इसमें से आपको 2 LAQ अटेंड हो जाते हैं, 2 LAQ लिख सकते हैं आप। थर्ड चैप्टर का एक LAQ पढ़ा रहा हूं मैं आपको हाइब्रिडेशन के बारे में। दिस इज द 21 क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आ सकता, नहीं तो और एक क्वेश्चन, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, explain SP2 SP3 hybridation with examples, ये क्वेश्चन समझा रहा हूं। तो hybridization is the phenomena of the intermixing of atomic orbital hybridization is the intermixing of atomic orbital intermix होके नए orbitals reproduce होते, that is the phenomena is called as the hybridization. Phenomena of the intermixing of atomic orbital and reproduce equal number of same orbitals, same number of identical orbitals is called as hybridization. जितने मिक्स हुए उतने नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते, सेम शेप वाले सेम एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स आते। So this is the phenomena of the atomic orbitals only. You have to give this definition, ऐसा definition लिखना है आपको, intermixing of the atomic orbitals and reproduce equal number of identical orbitals is called as hybridization. Hybridization में sp, sp2, sp3 hybridization है, तो what is sp, sp2, sp3 hybridization, एक के बाजू एक लिख रहा हूं मैं, sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization। तो फर्स्ट वाला sp hybridization है, व्हाट इज sp, देख के डेफिनेशन बोल सकते हैं, you have to give the definition like this, what is the sp hybridization,
intermixing of 1s orbital with 1p orbital, एक s एक p मिला, mixing of 1s and 1p gives the two identical orbital. This is the one and this is the second one. These two are arranged linearly, ऐसा arrange होते, and the angle between them is 180 degrees. This is the phenomena is called as SP hybridization. Intermixing of 1s with 1p and reproduce two identical orbitals. They are arranged linearly. Angle between them is 180 degrees. In this, S character is 50, P character is 50. This is called as the SP hybridization. Like that only you give the definition for the SP2 hybridization. What is the SP2 hybridization? Intermixing of 1s orbital with 2p orbitals, 1s with 2 orbitals, and reproduce how many identical orbitals? 2 plus 1, 3. 3 identical orbitals are formed. They are arranged in this manner. ऐसा जमे हुए रहते, इसको बोलते हैं triagonal बोलते हैं. They are arranged triagonally and angle between them is how much? 120 degrees. This is the phenomena. Intermixing of 1s with 2p orbitals and reproducing 3 identical orbitals is called as SP2 hybridization. What is the SP3 hybridization? SP3 hybridization सेम वैसी डेफिनेशन रिपीट करना है आपको. कितना यस दिख रहे हैं? 1. एक एस ऑर्बिटल, कितने p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं? 3p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं. इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s with how many p orbitals? 3p orbitals. Intermixing of 1s with 3p orbitals and reproduce, ये कितने आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहा? 3 plus 1, 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स. They are arranged in this manner. इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको. They are arranged tetrahedrally and angle between them is 109 degrees 28 minutes. This is called as SP3 hybridization. Once again I am repeating the definitions. What is hybridization? Intermixing of atomic orbitals and reproducing the identical equal number of the identical orbitals is called as hybridization. Hybridization is of following types, बोल के SP, SP2, SP3, SP3D वगैरह है, मगर एग्जाम में ये 3 हाइब्रिडेशंस एग्जाम्पल के साथ लिखो बोल रहा, तो ये 3 को एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले. तो SP एंड SP2, SP3 हाइब्रिडेशन देखिए ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं. फर्स्ट वन, इंटरमिक्सिंग. SP हाइब्रिडेशन में इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s with 1p orbital and reproduce two identical orbitals is called as SP hybridization. They are arranged linearly and angle between them is 180 degrees. What is the SP2 hybridization? Intermixing of 1s with 2p orbitals and reproduce the identical orbitals. They are arranged triagonally and the angle between them is 120 degrees. This is called as SP2 hybridization. What is SP3 hybridization? Intermixing of 1s orbital with 3 p orbitals and reproducing 4 identical orbitals. They are arranged tetrahedrally and angle between them is 109 degrees. That is called as which hybridization? SP3 hybridization. Now then you have to explain this hybridization with examples. Okay, example. यहाँ पे क्या ले लेना है आपको? एलिमेंट बेरिलियम. टेकिंग द एलिमेंट बेरिलियम. बेरिलियम के बाद कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन को ले लो. नेक्स्ट उसके बाद कौन सा एलिमेंट है? कार्बन. देखिए बी की वैलेंसी 2 रहने से इसके साथ में 2 क्लोरीन्स मिलाना, BeCl2 यहाँ पे, और एक क्लोरीन ज्यादा लिखो BCl3, यहाँ CCl4 ले सकते हैं आप, CH4 भी ले सकते हैं आप. सो these are the examples, BCl2, BCl3, CH4 और CCl4. so फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ BeCl2 में बेरिलियम का नंबर, यू हैव टू राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम लाइक दिस. Be एटॉमिक नंबर 4, configuration is 1s2 2s2 and there is no electron in the p orbital. इसको थोड़ा 2s को बॉक्स में ऐसा रिप्रेजेंट करना, 2s2 2p0, कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजना, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम्स आना, तो पेड़ अगर रहे तो एटम्स ओवरलैपिंग नहीं होता, तो ये क्लोरीन्स आते नहीं यहाँ पे, तो इसीलिए आपको एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भेजना है. इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट. एक्साइटेड स्टेट की वजह से 2s1 2p1 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, दैट गेट्स द 2s1 एंड 2p1 कॉन्फ़िगरेशन. सी दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन 2s1 2p1 कॉन्फ़िगरेशन.
This is the 2s1 and this is the 2p1 configuration. Now then you mix this 1s with 1p. ये 1s और 1 ये 2s और 2p एक एक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं. एज ए रिजल्ट देखिए sp हाइब्रिडेशन हो रहा है. You will get the sp hybridation. Once again I am repeating, beryllium atomic number 4 configuration 1s2 2s2 2p0, excited state configuration 2s1 2p1. As a result of this sp hybridation you will get the two hybrid orbitals. These two hybrid orbitals उसके बाद क्या करना, these two overlaps with किसको बनाना चाह रहे हैं अपन, बेरिलियम क्लोराइड BeCl2. तो किससे ओवरलैप करना, क्लोरीन से. these two hybrid orbital, this is the one hybrid orbital and this is the another one hybrid orbital. Two hybrid orbitals overlaps with the two chlorine atoms like this. एक 19 से और एक 19, दो hybrid orbital, दो क्लोरीन से ओवरलैप हुआ. कौन से ऑर्बिटल से, क्लोरीन के p ऑर्बिटल से. ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई, ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ. ऐसे दो सिग्मा sp bonds form होते. As a result of that we will get the BeCl2 molecule. Shape of that molecule is the linear shape and the angle between them is 180 degrees. This is about the formation of beryllium chloride. Now next you take the configuration of boron, formation of boron trichloride in sp2 hybridation. You have to write the example BeCl3. BeCl3 में बोरॉन का configuration 5 है, इलेक्ट्रॉन configuration atomic number 5 है, configuration 1s2 2s2 2p1 is the configuration. 2s2 2 electrons लिख लो and p orbital में एक इलेक्ट्रॉन डाल लो like this. Now then excited, क्योंकि तीन क्लोरीन्स को मिलाना है तो इसीलिए एक क्लोरीन को इधर सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को इधर शफल करना, इसको बोलते हैं excited state configuration. The configuration in the excited state is 2s1 2p2 is the configuration and this is the 2s1 and this is the 2p2 configuration. Intermixing of 1s with 2p orbitals, 1s and 2p orbitals. तो कौन सा हाइब्रिडेशन है, इट इज विच हाइब्रिडेशन, sp2 hybridization. Mixing of 1s with 2p hybrid orbitals and resulting in the formation of how many identical orbitals, 3 identical orbitals are formed. These 3 identical orbitals, these 3 hybrid orbital overlaps with the 3 chlorine atomic p orbitals. ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल है और एक क्लोरीन का, और ये और एक क्लोरीन का p ऑर्बिटल से ओवरलैप होता है. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बिटवीन देम सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता. कौन सा सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा sp2p बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं. ऐसे पूरे कितने आ रहे हैं, 3 सिग्मा sp2p बॉन्ड्स आ रहे हैं. देन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज, दिस इज द शेप, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर डाल लेके ऐसा मिला लो. सो दिस इज अबाउट द ट्राइगोनल मॉलिक्यूल, ट्राइगोनल शेप है ये. BeCl3 मॉलिक्यूल के बारे में है ये. नेक्स्ट अबाउट द formation of CCl4 or CH4. In this central element carbon undergoes sp3 hybridization. sp3 hybridization. I am writing the configuration of carbon. 1s2 2s2 2p2 is the configuration. Once again 2s2 is this one, 2p2 p ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ 4 एटम्स को अपने को मिलाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर एक्साइट कर लो. तो उसके बाद में दिस इज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. सो 1 2 3. In the excited state it undergoes which hybridation, sp3, mixing of 1s with 3p orbital. sp3 hybridation takes place in the first excited state. As a result of that 4 hybrid orbitals are formed. This is the one hybrid orbital, this is the second one, this is the third one, this is the fourth one, and these 4 hybrid orbitals overlaps with the chlorine atoms. अगर CH4 मैं ले लिया तो CH4 ले लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स, एंड फॉर्म्स व्हाट, सिग्मा. ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल. ऐसे पूरे कितने बॉन्ड्स है भाई, 4 बॉन्ड्स है. As a result of this overlapping you will get the sigma bonds. As a result of this you will get the CH4 molecule. This is the shape of the molecule. What is this shape? This is the tetrahedral shape and the bond angle is how much, 109 degrees.
28 minutes. This is about the SP3 hybridization. Once again I am repeating this: intermixing of 1s with 1p and reproduce two identical orbitals is called as sp hybridation. Intermixing of 1s and 2p orbital and reproducing three identical orbital is called as sp2 hybridization. Intermixing of 1s with 3p orbitals and reproducing four identical orbitals is called as sp3 hybridization. Now next example for the sp hybridization BeCl2. यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करना है. जस्ट आई वाज एक्सप्लेन this is about the SP2 SP3 hybridization. Now after this, what is the SP3D hybridization and SP3D and SP3D2 hybridization. एग्जाम में आपको ऐसे क्यों में पूछता है क्वेश्चन, राइट और एक्सप्लेन द शेप ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल बोल के, एक्सप्लेन द शेप ऑफ SF6 मॉलिक्यूल बोल के पूछता है एग्जाम में. सो दिस टू आर द इम्पोर्टेंट VSAQs इन द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, आपको अगर LAQ में नहीं आया ये चैप्टर तो 11th जो क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपको यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11th चैप्टर मतलब केमिकल बॉन्डिंग में 11th क्वेश्चन से जो आ रहे हैं वो ये क्वेश्चन है. PCl5 SF6 का स्ट्रक्चर लिखो, कौन सा भी एक पूछता, या नहीं तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में समझा बोलता. दोज आर द इंपॉर्टेंट SAQs फ्रॉम द थर्ड चैप्टर्स. ओके, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द शेप ऑफ PCl5 and SF6 molecule. Now next you have to see the atomic number of the phosphorus is 15, electron configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 is the configuration. 15 electrons हो गए यहाँ तक. तो उसके बाद में 3s2 बोले तो ऐसा इलेक्ट्रॉन्स और 3p3 तीन ऑर्बिटल्स में तीन इलेक्ट्रॉन्स लिख लेना. एंड 3d0 d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 3d0. टोटल 5d ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 2 3 4 5. तो अपने को मिलाना कितने हैं, 5 क्लोरीन एटम्स को मिलाना. यहाँ पे 3 पॉसिबल है, इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन को इधर शफल कर लेना. दैट इज कॉल्ड एज द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन. इन द एक्साइटेड स्टेट व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 जाके 3s1 हो गया और 3p3 वैसी है 3d1 कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज द 3s1 एंड दिस इज द 3p3 configuration and 3d1 configuration. D orbital contains one electron. In the PCl5 molecule, phosphorus undergoes sp3d hybridization. 1s, 3p and 1d orbitals. ये orbitals mix हो जाते. As a result of that, how many hybrid orbitals are formed? As a result of the sp3d, 1 is s and 3p and 1d. Total 5 hybrid orbitals are formed. These 5 hybrid orbitals are overlapped with the 5 chlorine atoms and forms the PCl5 molecule. ऐसा बोल के बॉन्ड एंगल वगैरह लिख लेना, बस हो जाता है. तो फिर once again I am repeating. In the PCl5, phosphorus undergoes sp3d hybridization in the first excited state. ये configuration लिख लेना. You have to write this configuration. As a result of this hybridization, 5 hybrid orbitals are formed. All these 5 hybrid orbitals are overlapped with the chlorine atoms and gives the PCl5 molecules. And the shape of the molecule is, this is the shape of the molecule. पहले क्या करना है भाई, आपको ट्रायगोनल शेप उतार लेना है. ये ट्रायगोनल शेप, ये देखिए, ये क्लोरीन और एक एक क्लोरीन. दिस इज द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप एंड द बॉन्ड एंगल इज 90 and 120 डिग्रीज. इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्रीज एंड 120 डिग्रीज. And explaining you last that is the sp3d2 hybridization shape of SF6 molecule. SF6 molecule में central element जो है sulfur है. In the SF6 molecule, central element sulfur undergoes which hybridization? sp3d2 hybridization. Atomic number of the sulfur is 16. Configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 is the configuration. 3s2 means this one, 3p4. p orbitals contains 4 electrons. There is no electron is there in the d orbital. Now 3d0. तो अपने को मिलाना कितने एटम्स है, 6 एटम्स है.
तो यहाँ पे दो पॉसिबल है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर शफल करना और एक इलेक्ट्रॉन को इधर शफल करना। तो क्या हुआ ये कॉन्फ़िगरेशन, 3s1 हो गया, 3p3 हो गया और 3d2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो दिस इज द 3s1, p ऑर्बिटल कंटेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपन भेजा है, एक यहाँ p से भेजा और एक यहाँ से s से भेजे। So as a result of the intermixing of 1s, 3p and 2d orbitals, we will get these 6 hybrid orbitals are formed. As a result of the SP3 D2 hybridation, 6 hybrid orbitals are formed. This 6 hybrid orbital overlaps with which atom? Fluorine atom, 6 fluorine atoms, and forms the SF6 molecules. SF6 molecule का जो shape है ऐसा, पहले स्क्वायर डाल लेना ऐसा, दिस इज द स्क्वायर, ऐसा डालने के फिर उसके ऊपर क्या करना है, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे डाल के थोड़ा ऐसा क्लोज कर लेना। सो दिस इज द शेप इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल शेप। एंड यहाँ पे जो एंगल है वो 90 है और यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्रीज, एंगल बिटवीन देम इज 90 एंड 180 डिग्रीज। दिस इज अबाउट द SF6 molecule. Inshallah, I will explain you another LAQ from the organic chemistry in next class. Assalamu alaikum.